How you are feeling after traveling so I'm long? a little bit tired, but it's too high. So it's long distance walking. So you know we have to walk for more 20 minutes or 30 minutes. Can you? Yes. I'm ready to go 20, not only 20 minutes, 1 hour also. I can walk. So where you are going? Going for, this is highest, that's Sirkhola location. It's a number 1 booth. So we have to move there. And my senior reporter is there, Savannah. So are you physically fit to move there? Yeah. Because I'll take you to the end point. Yes. I am ready to move. Let's go. Come on, move. Now, tomorrow is the polling day. Tomorrow is the second phase of polling. That is, if we talk about West Bengal is to undergo polling. Tomorrow, that is in the 3 constituencies, that is Darjeeling constituencies, Raiganj and Balurghat. Right now, I am standing at the interior village of the Darjeeling constituency, which is said to be as Srikhola. Srikhola is a place which is up to 7,000 feet high, which we can say. But this is very tough for the people to reach out here because there is no way of communication. People cannot travel out here by using a mode of communication as to be said as a transport or a cab, because there is only one way is the mode of transportation is the horse. They can take the horse and they can just put their luggages and all on top of it and they can just walk it. You can see the road that is there. The connectivity is very poor, where you can say that you have to just walk to get into this Srikhola polling booth. So the 3 villages is out here, which can make a total population of about 1,200, which is going to continue their vote tomorrow. As you can see, the arrangements has already been done. The central forces has already been arrived. And when we have spoken with the people are saying that obviously to continue with the vote or to cast your vote is important, because you need to face you get the chances to say your problems to the people. But at the same time, they also say when the vote is on, then so many leaders comes out and they say that they will do everything for them. Where you can say they are also complaining about their villages which have road bad connectivity. Even they say, since it is the very high polling booth, this is one of the topmost polling booth which is in the Bengal, which is located in the highest altitude, that is about 7,000 feet, which is very high, and the mode of communication is very weak out here. So it is very tough for the people to reach out here and to cast their vote. So पहले आप अपना नाम बताओ और अपने गांव का नाम बताओ। जी, मेरा नाम है शांति राय और मेरा गांव का नाम है श्रीखोला। श्रीखोला तो हाईएस्ट पॉइंट कहा जाता है। यहाँ पर हाईएस्ट पोलिंग बूथ जो है बंगाल का यहाँ पर है। तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है चल के जाने के लिए इतनी दूर? दिक्कत तो बहुत है, यहाँ से ऊपर जाना नीचे जाना बहुत तकलीफ है और गाड़ी भी नहीं है। यहाँ क्या बोले, मुश्किल तो होता है, तकलीफ बहुत होता है। गांव में अभी जब कल वोटिंग है, कल आप अपना मतदान देंगे, क्या चाहते हो गाँव के लिए, दार्जिलिंग के लिए क्या चाहते हो? दार्जिलिंग के लिए और गांव के लिए हम तो अच्छा ही चाहते हैं। यहाँ पे रास्ता बन जाए, बच्चों लोग के लिए अच्छा हो जाए। जो बीमार लोग पेशेंट लोग होता है उन लोग को चल के जाना बहुत तकलीफ होता है और उन लोग के लिए अच्छा होना चाहिए, ये चाहती हूँ मैं। वोट देना चाहिए लोगों को? वोट तो देना चाहिए, लेकिन जो लोग वोट लेता है वो लोग कुछ अच्छा ही नहीं करता है। जब वोट का समय आता है तो बोलता है कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ करता ही नहीं है। सब लोग सिर्फ वोट मांगता है और वोट मांग के जो जीत जाता है वो तो कुछ करता ही नहीं है। मेरा नाम प्रेम शेरपा है, गांव श्रीखोला बस्ती है। कल यहाँ पर वोट होने वाला है। ये बंगाल का हाईएस्ट पोलिंग बूथ है। क्या चाहते हो गांव के लिए, श्रीखोला के लिए? गांव के लिए विकास चाहता है, हम लोग वोट देता है, लेकिन विकास कर ले। खाने पीने के तो बहुत तकलीफ है और ये अभी जब बीमार होता है इसीलिए बहुत ज़रूरी है, रास्ता नहीं है, क्या करना है। और कैसे मजबूरी से सामान वामान कैसे लेके जाते हैं, क्योंकि तो गाड़ी आता नहीं है यहाँ पे? गाड़ी तो नहीं आता है, लेकिन कभी हम लोग उठा के ले जाते हैं नीचे वो गाड़ी तक, पुल तक। पुल से हम लोग पैदल चलना पड़ता है। और घोड़ा का भी इस्तेमाल किया जाता है? घोड़ा आता है, यहाँ का मटर आलू थोड़ा कम जाता है, वो भी। वोट देना चाहिए, इसलिए हम लोग को रास्ता के लिए वोट देने के लिए हम लोग जरूरी था। Now the
Bengal highest polling booth is Srikula Primary School, which is already ready to for the people to cast their vote. You can also see the central force has also been deployed out here so that they can just control the way of the voting which will be going on tomorrow. Now, since the people have said that what problems they are facing in this area, they also have complained that leaders do come only at the time of voting, but after that we don't see them. So tomorrow is the time when the people will be casting their vote, and the fate of the candidate, or we can say the different political parties, will be decided tomorrow.